Okay, so dB by dx can be written to be simply equal to अभी इसमें देखो म्यू नॉट इज कांस्टेंट, I R square all are constants, only this 1 upon, or you can just express it as d by dx of r square plus x square the whole raised to minus 3 by 2 will be left here. Or it's okay, we can just remember the direct result. So graphical representation here will be like this. And this shows that there is a point at which the magnetic induction will be maximum in both sides, and that point is actually x is equal to r by root 2 and x is equal to minus of r by root 2. So these are the 2 points where the magnetic induction becomes maximum. Okay, and then before that it is less than that value, and again after that it is less than that value, so that it attains its maximum at this point only, which can be obtained by just differentiating this equation and just equating that derivative with 0. तो क्योंकि डेरिवेटिव यहाँ पे 0 होना चाहिए कि नहीं, तो इसलिए डेरिवेटिव निकाल के अगर हम इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो उससे हमको ये रिजल्ट मिलता है, और उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है मैग्नेटिक इंडक्शन का वो भी हम निकाल सकते हैं आराम से, अगर हम इस x के बदले r by root 2 अगर डाल देंगे यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर, उससे हमको उसका मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगा आराम से, नो डाउट. So this is the one of the important result. You have to remember this correctly. Okay, so this is all about the magnetic induction due to the circular current carrying coil at a point along its axis. Okay, at a distance x from it. Yes. Now we can just talk about the Ampere's law. Okay, Ampere's law क्या कहता है? देखो, Ampere's law tells us simply that the magnetic induction का line integral जो होता है, the line integral of magnetic induction d bar dot dl bar का जो product होता है, it always happens to be mu naught times of the summation of all currents passing through that loop. This is the simple statement of Ampere's law, which means that the product of magnetic induction and length of element taken over any closed loop, किसी भी closed loop के अंदर के ऊपर अगर हम हर एक point के का element का length और magnetic induction का product अगर करते जाएंगे इस तरह से, सपोज यहाँ पे लेंथ का एलिमेंट का लेंथ कुछ dl है और यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन कुछ और है, यहाँ पे भी लेंथ का एलिमेंट का लेंथ कुछ और है और यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन कुछ समथिंग कुछ तो भी है, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमको निकालना है और ऐड करते जाना है हर एक पॉइंट पे निकाल के. तो इस तरह से हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन और लेंथ ऑफ एलिमेंट ये दोनों का प्रोडक्ट निकाल के हमको ऐड करते जाना है, और वो निकालने के बाद जो हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टेकन ओवर दिस क्लोज लूप. It happens to be actually equal to the mu naught times of summation of all currents passing through that loop. अभी इस लूप के अंदर से जितने भी करंट पास हो रहे होंगे तो उनका एल्जेब्रिक सम हमको करना पड़ेगा ताकि हमको यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन का लाइन इंटीग्रल मिल जाए. तो यही बात एम्पियर्स लॉ यूज करके हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसका मैग्नेटिक इंडक्शन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है, ये भी प्रूव कर सकते हैं. और इसके अलावा इसके दो एप्लीकेशंस हैं. फर्स्ट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड. ओके, सोलेनॉइड के सेंटर में कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो हम निकाल सकते हैं. और दूसरा उसका एप्लीकेशन है टॉरॉइड. तो टॉरॉइड के सेंटर में मतलब कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो भी हम निकाल सकते हैं. एंड रिजल्ट इज दैट मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड इज ऑलवेज गोइंग टू बी म्यू नॉट इनटू स्मॉल n into I, where small n stands for number of turns per unit length of the solenoid. So in this case, if suppose this is the solenoid like this, then we can consider the length of solenoid to be capital L here, which is actually the length of solenoid, and number of turns जो है, तो number of turns, total number of turns is going to be capital N. But if we just divide this capital N by capital L, then we get a number of turns per unit length, which is also called as the turns density. Okay, so turns density के ऊपर ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक इंडक्शन. So this is the formula for magnetic induction due to a solenoid.
एट द सेंटर ऑफ द सोलोनॉइड, मतलब इस सोलोनॉइड के सेंट्रल पॉइंट्स पे, यहाँ पे इन सारी सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले लाइन पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना बनता है, तो उसको हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं आराम से। और इसमें भी एक बात हमको समझनी है कि एट द एंड पॉइंट्स, ठीक है, एंड पॉइंट्स पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना बनता है, तो वो हमको पता होना चाहिए। इट बिकम्स हाफ ऑफ म्यू नॉट एन आई, रिमेंबर, हाफ ऑफ म्यू नॉट एन आई, इट बिकम्स हाफ ऑफ वॉट एवर इट इज प्रेजेंट इन द इनसाइड। तो जितना अंदर होता है उसके आधा मैग्नेटिक इंडक्शन एंड पॉइंट्स पे होता है, इधर या इधर, रिमेंबर, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द सोलोनॉइड। अभी इसमें एक बात याद रखो ठीक से कि जिस वायर से ये सोलोनॉइड बना हुआ है, उस वायर का जो लेंथ है, तो उस लेंथ को अगर हम एल बोलते हैं, स्मॉल एल सपोज, सो दैट स्मॉल एल विल एक्चुअली बी इक्वल टू n times of 2 pi r, where r is actually going to be the radius of each turn, like this. So this 2 pi r actually becomes the circumference of each turn, which should be multiplied with n so as to get the total length of the wire which this solenoid is made up of. तो मतलब ये सोलोनॉइड जिस वायर से बना हुआ है, उस वायर का लेंथ हमको इस फॉर्मूला से मिलने वाला है, याद रखो ठीक से। और एट द सेम टाइम ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा कि ओके सॉरी, एक्चुअली लाइट इज डिस्कनेक्टेड, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हुआ है। सो लेट अस कंटिन्यू विदाउट वीडियो, ठीक है, वीडियो सिर्फ यहाँ पे ऑन नहीं रहेगा। ओके, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। सो दिस इज व्हाट वी आर टू डिस्कस कि एल जो है, तो एल विल बी एक्चुअली इक्वल टू एन इंटू 2 पाई आर, बट एक्चुअली एन जो है, ये कैपिटल एन और स्मॉल एन के बीच में भी ये रिलेशनशिप है, देखो ठीक से। तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे, तो n कैन बी रिटर्न टू बी सिंपली इक्वल टू स्मॉल n इनटू l, वेयर कैपिटल L स्टैंड फॉर द लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड एक्चुअली, एंड देन वी कैन जस्ट गेट दिस एज स्मॉल l टू बी इक्वल टू n के बदले यहाँ पे आ जाएगा n इनटू कैपिटल L इनटू 2 पाई r, वेयर दिस 2 पाई r स्टैंड्स फॉर द नंबर length of one turn, and this n stands for the number of turns per unit length, and this capital L stands for the length of the solenoid. So this is the relationship between the length of the wire which this solenoid is made up of and the length of the solenoid itself. So this capital L is the length of solenoid, but small l is going to be the length of the wire which this solenoid is made up of. Remember, the same thing can be talked about in case of the toroid. तो toroid के बारे में अगर देखेंगे ठीक से, so this is a tentative shape of toroid.
Okay. Suppose the current enters in this and just leaves from this here. So we can just expect this whole wire, ये जो centers को join करने वाला जो line है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा magnetic induction पैदा होता है. And that magnetic induction here is given actually by the formula, same formula once again, that is mu naught into N into I here, where N stands for the number of turns per unit length once again. So capital N upon L. L मतलब यहाँ पे क्या होगा? If you just consider the radius of this toroid to be capital R here, then we can just get this as 2 pi R will be the total length of the toroid. And that's why we can just expect that this N is actually going to be capital N upon 2 pi R. Okay, where capital N is the total number of turns and this 2 pi R is going to be the total circumference of this whole toroid. Okay, but again we can just talk about if suppose the internal radius of this toroid is given, जो अंदर का रेडियस है इधर तक का, तो उसको अगर हमने कैपिटल R1 बोल के रखा है, and external radius of this toroid is also given, suppose यहाँ तक का जो रेडियस है तो वो अगर उसका R2 देखे रखा है, then how can we find out the average radius here? The average radius will actually be the arithmetic mean of R1 and R2 here. Remember, R1 plus R2 upon 2 करके वो average radius मिल जाएगा उसका, no doubt. Once we get this, and even if suppose we want to find out the radius of the each turn here, अब देखो each turn का radius अलग होता है और पूरे toroid का radius अलग है. अब ये पूरा जो toroid है उसका radius तो हमने देख लिया, कैपिटल R है वो, लेकिन हर एक टर्न जो है सिर्फ टर्न, तो इस टर्न का जो रेडियस होता है उसको हम बोल देंगे सपोज स्मॉल आर. ये सपोज स्मॉल आर है, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर and capital R1 and capital R2 here? You can just understand here, क्योंकि यहाँ पे देखो इन ये R1 और R2 इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है तो वो कितना होगा? डायमीटर के बराबर होगा, कॉइल के एक टर्न के डायमीटर के बराबर होगा, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है, R1 और R2 के बीच में का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली इस डायमीटर के बराबर, मतलब 2R के बराबर हुआ करता है. तो वी कैन जस्ट से दैट R2 means external radius of the toroid minus internal radius of the toroid is actually going to be this 2 times of small r, where small r stands for the radius of each turn of the toroid. And again we can just say that R2 minus R is going to be small r. से देखो कैसे, क्योंकि R2 मतलब क्या है? एक्सटर्नल रेडियस है, और R मतलब क्या है? मीन रेडियस है, एवरेज रेडियस है. तो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है तो उसको हम कैपिटल आर बोल सकते हैं. तो इसलिए सेंटर से डिस्टेंस और एक्सटर्नल रेडियस इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो स्मॉल आर होगा, और वही एक्चुअली कैपिटल आर माइनस R1 के बराबर भी होगा जरूर. अब देखो कैपिटल आर मतलब क्या है? एवरेज रेडियस, जो कि इस मिड पॉइंट से यहाँ तक मिलता है. और R1 मतलब क्या है? इंटरनल रेडियस, मतलब ये जो पॉइंट है, ये अंदर का जो सर्कल है उसका रेडियस R1 है. इसलिए उस ये मीन रेडियस में से अगर हम इंटरनल रेडियस अगर सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमको एक्चुअली ये वही मिलेगा, स्मॉल r मिलेगा. दैट इज रेडियस ऑफ ईच टर्न वी कैन से, रिमेंबर. एंड ऑल्सो कैन जस्ट टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ द टोटल wire which is this is made up of. So if suppose we call it as small l, then that small l will actually equal to number of turns, total number of turns multiplied by length of each turn. Now what is the length of each turn? We can just understand that it is a circumference of one turn of the coil. तो इस circumference कितना होगा उसका? तो ये इसको हम बोलेंगे 2 pi small r. This will actually be the circumference of one turn, and that is to be multiplied with total number of turns of the coil in this way. And then we can just be able to use the relationship between this small n and capital N here, so that we can just understand this capital N is going to be actually small n into 2 pi capital R, correct hai? So if we just put this value of n here, then we can be able to get this small l is equal to, that is the total length of the solenoid will actually be equal to number of turns per unit length into circumference of the toroid itself into circumference of each turn here.
ओके, तो ये हमको अंडरस्टैंड करना है. So we can just express it in terms of is simplified and get it as 4 pi square into small n into r into small r. No doubt. So need not to remember all this formulae actually, but you should be able to derive them on the spot whenever required. जहाँ पे भी चाहिए वो बिल्कुल कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है ये सारे फॉर्मूले याद रखने से. So this is all about the Ampere's law. We can see the Ampere's law कि ये दो एप्लीकेशंस तुम्हारे पास है, एक तो सोलोनॉइड के लिए और दूसरा टोरॉइड के लिए. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द different shapes, different current carrying conductors we have already seen here. Okay, तो ये सब हमने आज के लेक्चर में देखा. So in the next lecture tomorrow we'll just see the moving charges, the interaction of moving charges with the magnetic field. Whenever a charge moves in a magnetic field, what happens and how it behaves in a magnetic field. So what is the force acting on it, and what is the radius of that circle in which it revolves. तो वो सब हम कल के लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, so thank you all of you for this today's lecture. We'll just finish this lecture here.